The Banni grasslands of Kutch are a rich ecosystem with varied flora and fauna. This second largest natural grassland in Asia covers a total of 2,400 square kilometers. The Banni, as the landscape is popularly called, is inextricably linked to the Run of Kutch. The area has a population of 20,000 people living in 19 revenue panchayats in 48 villages. Of the total, 90% are Muslims and 10% comprise of Meghwal and Koli communities. The grasslands are home to nearly 80,000 animals, 50,000 buffaloes, 25,000 cows, 5,000 sheep, goat and horses, and are located on the flyway of several migratory birds. Increase and decrease in animal population depends on rainfall and the availability of water and grasses. Despite its dry and arid conditions, the Banni has a variety of 32 types of grasses that are about 3 times more nutritive than others. Every year, monsoon rains form several marshy wetlands that dot the Banni grasslands and the areas adjacent to it. This unique, one-of-its-kind ecosystem has been kept alive by the traditional Maldhari herders who have protected and nurtured it for more than 450 years. The Maldhari way of life has co-evolved with the Banni ecosystem. The high-yielding milk buffalo breed, the Banni buffalo, is a product of their breeding knowledge and the symbiotic relationship of the Maldharis with their landscape. The Indian Council of Agricultural Research recently recognized the Banni buffalo as the 11th buffalo breed in India. Research has shown that the Banni buffalo is capable of astonishingly high milk yields with an average of 2,857 liters of milk over the year with high fat content. The grasses of the Banni enable the Banni buffalo to calve at 3 years of age and achieve peak milk yields within 38 days after calving. Over the years, the Banni buffalo has developed unique qualities of adaptation, like the ability to survive water stress conditions, to cover long distances during periods of drought, and disease resistance. हिंदी में बोलते हैं कि लेकिन नहीं चाहिए, लेकिन माने इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, उसको हम असल बोलते हैं। तो असल भैंस में निशानी बहुत जात की होती है, जैसे उसका जो चमड़ी है वो पतला रहता है, दूम पतली रहती है और थोड़ी छोटी रहती है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर गोल सींग रहता है और आगे से पतली पीछे से चौड़ी और खुली भैंस से रहती है और ठंडे दिमाग की रहती है एकदम। वो जैसे मारना के ऐसा कुछ वो उसके अंदर वो नस्ल में होता ही नहीं है कि अपने दोने के टाइम में इसका बच्चा होए न होए तो भी उसका जो मालिक है दोने बैठ जावे तो वो दूध आराम से दे दे। इसका ये नस्ल, इसके हिसाब से हम उसको जानते हैं। ये जो बन्नी की जानवर के लिए जो आज़ादी है ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। अभी ये 3 बजे चली जाएगी अपनी मर्जी से, कोई आदमी साथ में नहीं होएगा और फजर में 5 बजे अपने आप वापस घर आ जाएगी।
दूध निकाल लिया, फिर रवाना कर दिया, चली गई, फिर 12-1 बजे वापस घर पे आ जाएगी, जैसे अभी आपके सामने निकली और सीधी घर पे चली गई। The Maldharis maintain the original bloodline of the Banni buffalo, and every buffalo within the same bloodline carries the same name. Banni buffaloes form close bonds with their owners and usually respond when called by their name. For example, Challi is the name of a bloodline that stretches back 108 years, and this bloodline is renowned for its capacity to produce high milk yields. इनके नाम एका कुंज है, के भाग है, मोर है, मिस्री है, पटोरी है, सुवर्ण है, वाधाई है, नरम है, ऐसे नाम। इंसान का नाम है, करम है, यूसुफ है, ऐसे नाम मोहम्मद है, ऐसे भैंस के नहीं आता है। भैंस के नाम अलग आते हैं। हम नाम जब भी दूध निकालते हैं तभी नाम से पुकारते हैं, जब भी भैंस गुम हो जाती है तभी हम नाम से पुकारते हैं, तो नाम सुनकर आ जाती है। This unique relationship and the wealth of traditional knowledge of the Maldharis and their understanding of genetic resources and breeds has been the subject of countless studies. A Sergivan study recorded 339 types of treatments by the local healer, called the Bhagia, of 38 kinds of animal diseases. The Maldharis categorize grazing patches based on soil types, distance from water bodies and villages, periodicity, and quality of drinking water for animals, grass, shrubs, tree cover, and wind. They can identify various species and benefits of such grasses on milk production. One of the unique Maldhari practices is to name their animal grazing patches. For instance, Dramani is a grazing patch where the shrub species Draman is found in abundance. Wetlands too have their names, like Kunjital, where common cranes are found, and Hanjital, where sarus cranes are found. The Maldharis have customary rules for grazing and management of the common grazing areas that are based on the interdependence between communities and a deep understanding of the ecosystem. They have a unique relationship with the Hindu farmers in faraway Saurashtra, one that started off as trade but has now evolved into kinship. This agricultural community has been buying bullocks from the Maldharis for many generations. The farmers buy bulls that the Maldharis rear upon the nutritious fodder of the Banni, and the Maldharis in turn ensure protection of the landscape because it is central to their livelihood. દાદા જસા બાપુ એમને બેને ઘાટા સંબંધ હતા, પછી કાસમભાઈને અને મારા દાદા બાવાવાળાને એમને ઘાટા સંબંધ હતા, પછી મારા બાપુ પ્રતાપવાળા અને રાવભાઈને બેને ઘાટા સંબંધ હતા. એ 4 પેઢીથી અમે એકાબીજાના સંબંધ જાળવી રાખીએ છીએ.
અને દર વર્ષે ગામના પાદરમાં બળદ લઈને આવે છે કચ્છમાંથી. રસ્તામાં એને અનેક મુસીબતો આવે છે. ખોટા માણસો એમને રોકે છે, તમે આ બળદોને ક્યાં લઈ જાઓ છો, પણ એમનું ફૂલ વેચાણ કાઠિયાવાડમાં થાય છે અને બધા ખેડૂતોમાં જ થાય છે. ખેડૂત તો જ એના બળદ બાંધે છે. અને જે ગરીબ ખેડૂતો છે અમારા, જેની પાસે એમ કે કોઈ બળદ લેવાની શક્તિ નથી, એવા ખેડૂતોને પણ પોતે આપને વચ્ચે રાખી અને બંધવી આપે છે. અને 3 વર્ષની ઉધારી, 3 ફાગણ હોય, પહેલો ફાગણ, બીજો ફાગણ અને ત્રીજો ફાગણ. 3 ફાગણમાં જે કિંમત બળદની થાય એ બળદની 3 ફાગણમાં પૂરી પાડવાની હોય. તેમ છતાંય કોઈ અકસ્માતે કાંઈ તકલીફ આવી ગઈ હોય ખેડૂતને, તો એ 4 ફાગણ હોતેને થઈ જાય છે, 5 ફાગણ હોતેને થઈ જાય છે. 5 વર્ષની ઉધારી હોતેને થાય છે. મામૂલી કિંમતે એટલે 30,000ની કિંમતે. 30,000માં અત્યારે ભેંસ પણ આવતી નથી. પછી 30,000માં આ બળદ બંધવી 3 વર્ષની ઉધારી કરી ખેડૂતને કોઈ કામ આવી ગયું હોય તો 5 વર્ષની उधारी होते करी नाखे। भाई हमारे आने की सीजन 2 है। एक तो दिवाली से पहले हम निकल जाते हैं, 2.5 महीना 3 महीने की मुसाफरी हमारी होती है। सब गांव में रुकते रुकते आते हैं और किसानों को 2 बड़द किसको 1 बड़द हम देते हैं। लेकिन किसान तो हमको बोलना पड़ता है, लेकिन हम किसान बोलने से हमारे तो भाई जैसा है। ये तो अब क्या है, समाज के हिसाब से बोला तुम कहाँ गए, तो तुम पूछो, तुमको हम बोलते कि भाई हम किसान के पास गए थे। लेकिन ये तो हम ऐसे भी बोलें कि हमारे भाई के घर पे गए थे तो भी बोल सकते हैं, हमको इतना अधिकार है इनके पास। मैं पहली बार इधर जब बस में आया था बैठ के, तब जामनगर भूज की 15 रुपये टिकट थी, ये मेरे को मालूम है। आज टिकट कम से कम 160 होगी या 150 होगी। 32 साल हुआ मेरे को इधर आना है। हम ऐसे नहीं सोचते कि हम बैल के लिए कि धंधे के लिए भी आते, हम तो अभी ऐसा भी सोचते कि हमारे भाइयों के पास आना जाना हम चालू रखें। लेकिन हम ये सोचें कि हमारा ये हिंदू मुसलमान में जो हमारा संबंध है ये तो सबसे अच्छा है, हमको गौरा है। कहीं भी तुम एशिया के कोने पे जाओ ऐसा तुमको कहीं नहीं मिलेगा। तुम तो घूमे भी हो, तो हम में इतना पैसा नहीं कमाते हैं इनमें। और इससे हमारे आदमी और जो छोटे छोटे धंधे करते, भैंस बेचते, ये हमारे से कीमत में बढ़ जाता है। लेकिन हमको मगज में ऐसी बात बैठ गई है कि हमारा ये रास्ता टूटना न जाए। This uniquely syncretic relationship between the two communities has evolved over centuries, and examples such as these have contributed to the culturally rich tapestry of the region, one that has also helped sustain the ecological health of the Banni grasslands, directly or indirectly. In recent times, the Banni grasslands have seen changes, not all of them welcome. The invasion of Prosopis juliflora, a highly invasive alien species initially propagated by the government as a part of an official policy of greening the Banni, is a big threat. In fact, the widespread loss of concrete cattle was due to their inability to digest the toxic pods of the Prosopis juliflora. This weed has threatened the fodder security in the region, forcing the Maldaris to go for seasonal migration in search of fodder. कांटा बावल जहाँ इसका वो पत्ता गिरता है ना, वहाँ घास नहीं होता है, खड़ खड़ घास नहीं होता है वहाँ। और इसका जहाँ छाँव पड़ती है, परछाया, वहाँ भी घास नहीं होता है। तो पहले एक सरकार ने ऐसा नियम निकाला कि ये गांडा बावल जो है उसको निकाल दो। तो उसके बाद इसके आगे तो ये जब दरख्त नहीं था, गांडा बावल नहीं था, तब 5 फुट या 6 फुट घास होता था इस बन्नी में। फिर ये गांडा बावल आने से उस घास का पूरा नाश हो गया। Another threat, a recent one, is from the industries coming up in the region. The government of Gujarat has been giving permits to chemical industries to set up operations in the Rann of Kutch that borders the Banni.
The discharge of industrial effluents into the Banni has begun to pose a serious threat to all who live in it. In a bid to arrest livestock migration from the Kutch district and ensure fodder security, Sahajivan, in association with the State Forest Department, has taken up a project to develop Banni grasslands in the region. सहजीवन पिछले 20 साल से कच्छ में जो ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक व्यवसाय के साथ ताल्लुका रखने वाले समुदाय के साथ काम कर रहे हैं और सहजीवन का विज़न और मिशन ये है कि जो इकोसिस्टम है, जो निवसन तंत्र है, उसके साथ जो रहने वाले लोग हैं, उसको बनाए रखने वाले जो लोग हैं, उनके साथ काम करना है। और जो पशुपालन व्यवसाय है वो कच्छ में सबसे बड़ा व्यवसाय है और यहाँ की जो पशुओं की जो संख्या है वो लोगों की संख्या से भी ज़्यादा संख्या है और यहाँ की नस्लें हैं, खास करके यहाँ की गाय है, यहाँ की भैंस है, वो देश की सभी नस्लों से कुछ अलग है। तो ये नस्लों को बनाए रखने के लिए बन्नी जैसे निवसन तंत्र को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो सहजीवन का ये मानना है कि बन्नी का जो ग्रासलैंड है, एक इकोसिस्टम है, वो अगर बना रहेगा तो उनके साथ जुड़े समुदाय हैं, उनका अपना पारंपरिक व्यवसाय भी बना रहेगा और ये बनाए रखने से एक इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहेगा। और इसके लिए इसके साथ जुड़े जो समुदाय हैं, जो समाज है, उनको एक रास्ता बताना, उनको नई दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में अवगत करना और ऐसे बायोकल्चरल प्रोटोकॉल है और उनके लिए अलग अलग जो अधिकार घोषित किए गए हैं वो अधिकार उनको कैसे मिल पाएंगे, उसके लिए एक जो रास्ता दिखाने का जो काम है वो सहजीवन का एक सोच है। और बन्नी में एक संगठन बना है और उसमें बन्नी के सभी गांव से, सभी पंचायत से और सभी समुदाय के मालदारी हैं और ये संगठन अभी राष्ट्रीय स्तर पे अपनी एक पहचान बना रहा है। तो ये संगठन के तहत बन्नी की आवाज़ और बुलंद होगी और बड़ी होगी और उनकी आवाज़ और दूर तक जाएगी। Recently, representatives of different panchayats in Banni have formed a Banni Breeders Association. The association has 965 members and an executive of 21 members. Conserving a landscape as unique as the Banni is always challenging, and there is no mantra that can be applied that will work. Recognizing this simple truth,